with closed eyes. Close your eyes and जैसे आप हो on that spot, just close your eyes and just feel the joy. If you are feeling joy, it's okay. If you are feeling happy, any emotion, become that emotion. Become that emotion. And just allow your body to settle. जब बैठ जाएं जहां आप बैठे थे, बैठ जाएं आराम से without breaking the state, and just very gently, very gently rub your hands. Very gently rub your hands. Gently, बहुत आराम से. And feel your hands. Feel your hands that you are rubbing. Feel the texture. Feel the texture of your hands. How, with closed eyes, feel your left hand with your right hand. Feel your fingers. Feel your fingers. Touch your left hand as if you are touching the hands of your lover. Feel your hand. Feel your left hand with your right hand. अपने हाथ को एक्सप्लोर करो. एक्सप्लोर योर हैंड. कैसा लगता है आपका लेफ्ट हैंड, है ना? कैसे बनाया है परमात्मा ने इसको, कितनी हड्डियां हैं इसमें, कितना आपकी लाइफ कितनी इजी है इफ यू हैव एन लेफ्ट हैंड. Caress your left hand. Caress it. Caress your left hand as if आज ही मिला है आपको. आज ही मिला, नया नया, पहले नहीं था. और कितनी सुविधाएं आपको आपके पास आ जाएंगी इफ यू गॉट. कभी देखा नहीं था अपने लेफ्ट हैंड को. ओपन योर आईज एंड सी योर लेफ्ट हैंड, हाउ इट लुक्स. What is the weight of your left hand? What is the weight it is carrying? है ना? What is the electricity? क्या इलेक्ट्रिसिटी है आपके लेफ्ट हैंड में? Feel the flow of blood. And love your left hand as you want to love it. You can kiss your left hand. You can. हमारा हाथ प्रेम का बहुत भूखा है. इसे कभी तवज्जो नहीं दिया है ना? हालांकि you can do one exercise whenever you feel के give a good massage to your left hand. बहुत एक्सपेंसिव कोई ऑयल हो आपके पास या क्रीम हो, इवन मसाज टू योर लेफ्ट हैंड. इट इज द वेरी इजी थिंग, है ना? अप्रिशिएट योर लेफ्ट हैंड. दिस इज द मोस्ट रिप्रेस्ड पार्ट. सेक्स से भी ज्यादा रिप्रेस्ड है.
सेक्स की तो भी याद आती है ना, दिन में 2 बार 5 बार, लेकिन लेफ्ट हैंड की कभी याद आई है आपको? सोचो कितना रिप्रेस्ड है बेचारा। एंड दिस इज द सीट ऑफ योर इंट्यूशन, this is the seat of all creativity, all supreme powers you have got. Right? Okay. हाथ छोड़ दे and just without touching it, just feel your left hand without touching it. Bring your consciousness. See how beautiful you feel when you feel your left hand. Okay. Right? So ये कहना चाहूंगा इस ध्यान के बाद में कि intuition is a journey, and this journey pays you a lot. आप, it's a tool basically. इंट्यूशन एक टूल है ना? टूल आप जानते हो क्या होता है? कि इट्स अ टूल। कि जैसे आपके घर में अगर फर्नीचर का कुछ काम है, तो जो कारपेंटर वाले हैं, या तो फिर आपको कोई कपड़ा सीना है, तो जो स्विंग मशीन होती है ना, ये एक टूल है। इससे आप चादर भी सी सकते हो, इससे आप शर्ट भी सी सकते हो, ड्रेस भी सी सकते हो, कुछ भी, है ना? इससे कुछ भी आप, यू कैन, इट्स अ टूल बेसिकली। आप इसको कहाँ यूज करते हो? कबीर भी जो थे ना, कबीर भी है ना, सिलाई वाला काम करते थे, तो वो चादरें बीनते थे, है ना? तो सुई जो होती है ना, वो भी एक टूल है, इट्स अ टूल। इंट्यूशन इज ऑल्सो अ टूल। यूज, ऐसा समझना कि भाई आई एम यूजिंग माई इंट्यूशन एज अ टूल। ओके, इट्स अ सुप्रीम टूल, बट इंट्यूशन इज अ टूल।